Hello everyone, how are you? And hope you all are doing good. And it's really nice to meet you all again. आपसे फिर से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है. And I hope you liked yesterday's session. कल हमने ध्यान के बारे में कुछ बातें की थी and we have just understood a little bit about meditation and especially about heartfulness meditation and we did experience that too. हमने हार्टफुलनेस मेडिटेशन की अनुभूति भी की थी. So I welcome you all in the second day. My name is Anagha Kulkarni. Again, for those who are joining for the first time, I welcome you all to this 3 days meditation session from Heartfulness. And if you give me a couple of minutes, I'll share a presentation with you. Presentation छोटा सा ही है, बहुत सरल है और बहुत सादगी भरा है. लेकिन जो टेक्निक हम आज सीखने वाले हैं वो काफी गहरी है, काफी गहन है. तो मुझे बस एक क्षण का आप वक्त दे दीजिए. I hope you all are able to see the screen. And again to these wonderful, glowing, loving and outstanding women of this group and the women and the ladies and the sisters who would be watching it afterwards, I welcome you all in this heartfulness workshop on meditation. So for the people who have joined new for the first time who are attending this session, what we did yesterday was meditation and what heartfulness is all about. It's from stress management to self-realization. Self-realization as in realizing that joy which we all carry within, because that's why we are all are glow, right? Glowing, loving and outstanding. So letting go of stress and experiencing that pure joy which we all carry, every being, not only our sisters, but all brothers and sisters who carry this joy within. So heartfulness is all about that. A simple life, a pure life, a very positive existence, and a positive personality. It's all about heartfulness. What it does is awakens our potential for a simple and joyful existence, as I said, and potential about innovation, potential about creativity. We all have a lot of potential. We all have this infinite states of consciousness which are lying in our heart, and it awakens. Heartfulness meditation awakens all those states, right? And through what? Through a very simple and subtle practice of meditation. It's a very subtle, as in very sukshma practice. What is the spread or expanse of heartfulness in this entire world? Heartfulness presence is there in more than 160 countries. And around 2 million practitioners are there, meditators, practitioners as in meditators, who are being benefited by these practices of meditation, simple techniques. And there are more than 10,000 trainers worldwide, and all these services are free of cost. इसका कोई शुल्क नहीं है, ये निःशुल्क सर्विस है, ये निःशुल्क सेवाएं हैं. आप दुनिया में कहीं भी जाए, किसी भी कोच के ट्रेनर के पास अगर आप जाएंगे हार्टफुलनेस की प्रैक्टिस सीखने के लिए, तो आपसे कोई शुल्क कभी नहीं मांगेगा. We are going to have 3 sessions, out of which this is day 2. And in day 1, what did we do? In day 1, we have relaxed and meditated. Relaxed as in what? It's a relaxation technique. जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम हमारा सारा तनाव जो है उसे लेट गो करते हैं. हमारे शरीर से सारा तनाव चला जाता है. एंड वी कम इन अ वेरी नेचुरल स्टेट, अ वेरी natural state of restfulness. Our mind comes to a state of restfulness, and then we meditate. Now, what does meditation means in the right way? Meditation is actually thinking or trying to feel about something all the time. It's thinking continuously and effortlessly, either on one object or a situation, and something that happened in our life. So we all know that we all meditate all the time. But on what? But we meditate on the negativities of our lives, worries, क्या होगा जीवन में, कैसे होगा, and it becomes a meditative state. And what happens after that is
we attract, similar forces of nature. We feel depressed, we are sad, and whatnot. So that's a meditative state. But what is heartfulness meditation? Heartfulness meditation actually enables us or awakens us to meditate on the right object, right thing. And what is that object? Is that higher source of consciousness in our heart, that purest energy, the simplest energy which we carry within us. When we start meditating on that, the negativities fall off. वहां से negativity चली जाती है and we feel a positive energy within us, joy, peacefulness. ये सारी चीजें जो है हमें इसकी अनुभूति होती है ध्यान से. अभी आज का जो सत्र है, हमारी आज की जो टेक्निक है, वी कॉल इट एज रिजुविनेट. अभी मेडिटेशन तो हो गया. व्हाट एग्जैक्टली इज रिजुविनेट? एंड why rejuvenation is required? I mean, can't meditation alone should be enough? So that answer is, oh, okay, it's a recap of day 1. I have already shared with you what we have done. रिजुविनेशन. अभी ये रिजुविनेशन जो हम कह रहे हैं या जिसकी बात कर रहे हैं, वो हमारे अंदर जो भी इम्प्रेशंस है, हमारे अंदर जो भी हेवियर इमोशंस है या बर्डन्स है, उसको हमें कैसे लेट गो करना है, ये टेक्निक हमें सिखाती है. आई वुड से दैट रिजुविनेशन इज actually the core of heartfulness. It's the very essence of heartfulness. And meditation on the heart, what does it how does it help us? As you can see on the screen, our mind is the faculty to contemplate. This is the faculty which is given to us by the nature. ये जो भी फैकल्टी है, ये जो भी टूल है, ये हमें नेचर ने दिया है. कंटेम्पलेशन यानी का चिंतन करने के लिए. और हृदय क्या है? हृदय जहां पर चेतना होती है, consciousness. When we talk of higher consciousness, its seat is in the heart. So when this contemplative faculty and the faculty of consciousness, when they meet, there the expansion of consciousness happens. यानी हमारे अंदर जो चेतना है, जिसके बारे में हमें पता तो है, लेकिन हमने कभी उसकी अनुभूति नहीं की, उसका विस्तार होता है. जब ये दोनों फैकल्टीज एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, हार्मनी में आते हैं, then what happens there is the expansion of consciousness. So it was all about meditation, which we did yesterday. Now, before actually starting today's technique, I would like to ask you one thing. Imagine a situation where we are shifting, probably from one region to another region, maybe continent or maybe country. तो हमें, हमारा उद्देश्य ये है कि अभी हमें नए जगह जाके बसना है और हमें वहीं के होके रहना है. इट्स अ एंटायरली न्यू स्टेट, राइट? नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हेन वी गो इन एनी अदर कंट्री, say for example, or any other region within even our own country, तो हमें क्या महसूस होता है जब हम वहां पे जाते हैं? तो we feel that the entire dimension is new for us. The culture is new for us, the language is foreign to us, the way they live, their living standards, their behavioral patterns, everything is new for us. But our goal is to become one of them. Now here, what do? We try to become like them. Say for example, अगर हम कहीं दूसरी जगह पे जाए जहाँ पे हमें तो बड़े चाय पीने की बड़ी आदत है, और दूसरी जगह जाए वहाँ के लोग कॉफी पसंद करते हैं, उनका कल्चर है, तो हम क्या करेंगे अगर हमें वहाँ के बन के रहना है? सो वी नीड टू डेवलप दैट न्यू liking, that new habit, that new language, that new culture of having coffee, and we have to let go of our own prejudices, our own burdens, or our own habits or tendencies that we carry with me. So I hope you all agree with me, because it's just an example in the external world. Now we meditate. When we meditate and we try to unite these two faculties of our mind and our heart, actually, in fact, it's a contemplation and consciousness. When they are uniting,
यू नो। तो यहाँ पे ये जो हमारी चेतना है, ये जो हमारा कॉन्शियसनेस है, ये कैसा है? इट्स एब्सोल्युटली प्योर, इट्स एब्सोल्युटली जॉयफुल, इट्स एब्सोल्युटली पीसफुल. There's lot of compassion there, there's lot of brotherhood, there's lot of harmony, all these nobler feelings, everything is there. ये ऐसा उसका क्षेत्र है. अभी जब हम कल हमने जब मेडिटेशन करने की कोशिश की, तो क्या तुरंत जाके हमने उस चेतना को एकदम प्यार से गले लगा लिया, या बीच में कुछ विचारों के प्रवाह भी आए? शायद से मुझे ऐसा लगता है थोड़े थॉट्स तो आए होंगे. तो जब हम उस हायर कॉन्शियसनेस के एरिया में, उसके डायमेंशन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो क्या हमें उसकी भाषा सीखनी जरूरी नहीं? क्या वहाँ का कल्चर हमारे लिए जरूरी नहीं? कि कैसा है हमारा ये चेतना क्षेत्र, कैसा है ये कॉन्शियसनेस, कैसा उसका एक्सपांशन होता है, कैसे हमारा आई वुड से उन्नति या इवोल्यूशन होता है. For that, we need to learn that language of the heart. We need to learn that culture of that particular dimension, because it's, as we call it, it's a higher consciousness. Higher is something which is very nobler than what we can think of it or what we perceive of it. तो जब हम ये करते हैं ध्यान, तो हमें पता चलता है कि उस चेतना के क्षेत्र तक पहुंचने के लिए, या वो जो सोर्स है हमारे अंदर, उस तक पहुंचने के लिए काफी चीजें बीच में आ रही हैं. और वो चीजें क्या है? वेल, वी ऑल नो, लॉट ऑफ थॉट्स, बहुत सारे विचार आते हैं और हमारा मन भटक जाता है. फिर हम कोशिश करते हैं, फिर हम कहते हैं कि नहीं, हमसे तो ध्यान ही नहीं हो रहा है. We are trying, but something is not, maybe I am not the right person for meditation. But it's not like that. We all start with the same state. So what happens here is, all our faculties, external faculties, now say our eyes, our ears, जिसे हम कहते हैं पंचेंद्रिय, all our faculties, they are directed outwards, and we keep on absorbing all the time something or the other out of these faculties. कभी डरावनी भूत की फिल्म देख ली तो क्या होता है? रात में डर लगता है, as usual, है ना. Many times we are scared of that darkness outside. Maybe हम उस दिन रात को लाइट लगा के सोते हैं. So what happens at that time? ये क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि हमने अभी अपने अंदर डर की छापे बना ली. It's just like that, If you see a beautiful flower of rose or rosebud, we feel happy because that impression is created within us. And when that thought comes, the emotion associated with that impression comes out, तो ये चीजें मैंने आपको जो बताई है, एक सिंपल से ये जो एग्जाम्पल से, कि अगर कहीं भूत वाली फिल्म याद भी आ जाए तो उसके साथ डर का इमोशन भी ऊपर आता है. ये कहाँ पे होता है, ये कैसे होता है, इसके बारे में तो हमने कभी सोचा नहीं, राइट. सो थॉट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ सम काइंड ऑफ इमोशन. इमोशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्ट and thought is a characteristic of mind. So they are not alone in a way. So what happens is, because of our past experiences, or the way we have formulated our habits and all, we tend to categorize these emotions and these thoughts into likes and dislikes. जैसे कि कल मैं कह रही थी कि आलू की सब्जी तो बहुत पसंद है और करेला तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो अगर हमें याद भी आता है आलू तो बड़ा अच्छा लगता है, और अगर करेला याद आए तो ओ नो वे. सो these thoughts, these emotions are always, we try to categorize, in our subconscious mind, we try to categorize it in likes and dislikes. And when likes are there, something which we like, some that kind of thoughts, or those kind of impressions, we are always pleased. And dislikes, as we all know, हमें किसी को पसंद नहीं, and our mind keeps on churning all the time because of that. Now, just to tell you some scientific fact about this, how many thoughts a human mind, encounters. I would not say encounters, but human mind has in a day. आपको क्या लगता है कि कितने विचार हमारे मन में, इंसानी मन में
एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जिसे कहते हैं, कितने थॉट्स आते होंगे? क्या लगता है आपको? 70 to 80,000. Yes, 70 से 80,000 thoughts on an average, you know. And if you consider your entire life, or probably if you even scan one day of your life, are so many thoughts really essential for that day? Nothing like that. It's not like that at all. Probably, 4%, 5%, max to max 10% of that may be required to carry out our day-to-day activities. But otherwise, rest of the thoughts are just like that. They are all, random things that we have accumulated. And because of that random things, we feel drained out, because these are all unnecessary things, right? अगर आपके मोबाइल में एक साथ आप 10-12 ऐप शुरू कर दे, बहुत से लोगों को गेम खेलने का बड़ा चाव होता है, उन्हें बड़ा पसंद है मोबाइल गेम खेलते, ऑनलाइन गेम। अगर आप 10-12 गेमिंग ऐप एप्लीकेशंस आप खोल देंगे ना, तो क्या हो जाएगा? द मोबाइल विल हैंग, राइट? द सेम थिंग इज विद द लैपटॉप. So if the gadgets suffer so much because of unnecessary things which are running at the same time in parallel, what about human beings then? तो फिर हमारे बारे में तो आप सोच के देखिए। कल जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही थी कि जब बहुत गड़बड़ी होती है, मॉर्निंग में बहुत काम होता है, हम बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है? बहुत सारा कंफ्यूजन है, वहां पे केओस है, और हमारे समझ में नहीं आता क्या होता है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट? व्हाट्स द आउटकम? द आउटकम इज ऑलवेज फ्रस्ट्रेशन, anger, and stress. So these thoughts, we keep on accumulating every moment in the form of impressions, and we try to categorize those thoughts into likes and dislikes. And ये सब लेकिन कहाँ पे हो रहा है, ये हमें पता तो नहीं चलता है। All these, this churning and accumulating, and it's all happening at the level of subconscious mind, जो शायद हमें पता भी नहीं है, लेकिन वहां पे जाके ये सारी जो चीजें हैं वहां पे जाके बैठने लगती है। जस्ट टू एक क्लैरिटी के लिए एक और थोड़ा एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अगर आप आंखें बंद करके जीवन की ऐसी कोई घटना याद करिए जिससे कि आपको बहुत खुशी मिली हो, चाहे वो कितने ही साल पुरानी क्यों ना हो, मे बी सम गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, और व्हेन वी वर गोइंग इन द स्कूल, तो कभी टीचर ने वो स्टार दिए होंगे या वेरी गुड लिखा होगा, ऐसी कोई भी चीज, या कोई अच्छी चीज हमारे साथ हुई होगी, शाबाश की दी हो, या हमने किसी की मदद की हो। इफ यू रिमेम्बर, दैट मेमोरी विल कम आउट, नॉट ओनली द थॉट बट विद दैट इमोशन। हम तो चाहे लगता है हम तो भूल गए उस चीज को, but it's not like that. It's lying there, inside us. Exactly in the same way, what happens is there are many things which we try to, get past of, कि नहीं हमें ये याद नहीं करना, ये अनुभव जो है दुखदायक है, ये मेमोरीज अच्छी नहीं है। लेकिन अगर वो मेमोरी हमें आती है, वैसे कोई याद आती है, तो क्या वो सिर्फ याद आती है या उसके साथ वो इमोशन भी आता है? इट मीन्स दैट इट्स लाइंग देयर, राइट? It's lying there all the time, and probably we are not unaware of that. Now imagine our existence with so much of emotional burden, so much of burden that we are carrying. और ये burden कैसा है? This burden is in a way it's a dead burden, because हम वो वक्त को तो अभी फिर से हम उसको रिवाइंड नहीं कर सकते। It's all done deal, वो तो हो गया है अभी। तो फिर ये सब बर्डन हम अपने साथ कैरी क्यों करें? And the more burden we carry within ourselves, that joy goes out of our life. So now how to rejuvenate, how to let go of that burden and again connect with that higher source of consciousness, because now this burden is coming in between me and that joy which is within me. How to get rid of that? So that we will learn here. As I have discussed with all of you, these thoughts और उसमें से होते हैं एक्शंस, और जब वही एक्शंस रिपीटेटिव होने लगते हैं तो वो हैबिट्स बनती है, टेंडेंसीज बनती है, और बहुत डीप रूटेड टेंडेंसीज बनती है हमारे अंदर। एंड देन दे क्रिएट इम्प्रेशंस ऑल ओवर आवर हार्ट, जैसे कि वो हमारी जो चेतना की जो अवस्था है, दैट जॉयफुल सोर्स इन आवर हार्ट, वो उसको बांध लेता है। एंड देन वी फील
all sort of sadness and sufferings and miseries in our life. क्या एक्शन से ही सिर्फ इम्प्रेशंस क्रिएट होते हैं, छापे हम इसको बोल सकते हैं? ये तो इनएक्शन से भी होता है. Inaction as in something which we should have done, but we did not do because of some reason. I don't know, that reason can be anything. Or wrong action, out of that comes guilt. Guilt as in जिसे कहते हैं अपराध बोझ या अपराध भावना. ये बहुत भारी बोझ है, ये इतना आसान नहीं है. और ये इतना बोझ जब हमारे अंदर हो तो हम हमारे अंदर के उस जॉय को हम कैसे महसूस कर पाएंगे? बिकॉज दैट जॉयफुल कंडीशन इज एस एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ लाइटनेस. एंड अपराध बोझ एज द नेम सजेस्ट और एनी काइंड ऑफ इम्प्रेशंस और छापे हम जिसे कहते हैं, मराठी में इसे कहते हैं ठसे, ये जब हम अपने अंदर जमा करते रहते हैं तो लाइटनेस की कंडीशन चली जाती है. एंड व्हेन वी मेडिटेट, व्हेन वी ट्राई टू कनेक्ट विद आवर हार्ट, वी कम टू नो दैट इट्स नॉट ईजी. हाँ, बहुत सारे विचार आ रहे थे ध्यान करते हुए, तो ये कहाँ पे ये विचार है, ये कहाँ पे ये हैबिट्स है, ये सब हमारे ही अंदर है. So is there any way to get rid of all these impressions, get rid of these habits which are so ingrained in our existence? And और ये किसने बनाए हैं? ये सब हमने ही बनाए हैं, किसी और ने तो नहीं बनाए है ना. ये जो हमारे थॉट पैटर्न्स है, ये हमारी टेंडेंसीज है. अभी इसको कैसे निकाला जाए? क्या पॉसिबल है? हाँ जी, ये बहुत आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं. तो फिर इसके लिए क्या ज़रूरत है? इसके लिए हमें हमारी थोड़ी सी इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, जिसे हम कहते हैं विल पावर. ये विल पावर अगर हम यूज़ करें तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड में और हमारे हार्ट के इर्द गिर्द ये जो जमे हुए छापे हैं, ये बोझ है, हम इसे लेट गो कर सकते हैं. और जैसे ही ये लेट गो होगा तब हमें बहुत लाइट फील होगा, बहुत जॉयफुल फील होगा. हैप्पीनेस इज अ डिफरेंट different feeling, different emotion, but joy is something so light, so pure, and that is the condition of that source, of that higher consciousness. It is something of that characteristic of that nobler thing that we have within us. तो फिर हमें कैसे करना है? मतलब अगर हमें ये सारी छापे हटानी है, हमें अगर कुछ जिसे हम कहते हैं कि टू क्रिएट समथिंग न्यू, इफ वी वांट टू क्रिएट आवर डेस्टिनी अफ्रेश, हमें वो जो पहले लिखा हुआ है हमें उसे क्लीन करना है. तो ये कैसे क्लीन किया जाए? तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है. We have learned meditation, and meditation is to be done in the morning, heartfulness meditation, where we give a suggestion, a very simple suggestion that source is there in my heart in the form of divine light. That is, divine light is present in my heart. But are we able to see that divine light? Can we see that? Probably no, because it's absolutely pure, and something which is absolutely pure and very simple, we can experience it, but we cannot see it. तो हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को एक सजेशन देते हैं कि जो भी ईश्वरीय प्रकाश है वो हमारे हृदय में है और हम अपने आप को छोड़ देते हैं. Because now we just want to dive deeper inside us and try to feel that higher thing, that higher state of consciousness. That is what we do in the meditation. But what about the things which are coming in between? ये जो मार्ग की जो अड़चने हैं, इससे अभी हमें कैसे साफ करना है? तो इसे हम कहते हैं सफाई की विधि, या हम इसे कहेंगे हार्टफुलनेस क्लीनिंग. ये कैसे किया जाता है? सो इफ यू परमिट मी, आई वुड लाइक टू शेयर अ वीडियो विद यू. Cleaning is done in the evening after the end of a day's work.
You are mentally cleaning complexities and impurities from your system. Sit comfortably, gently close your eyes and relax. Bring attention to your back from top of the head down to the tailbone. Imagine all complexities and impurities are going out of the whole system in the form of smoke. The smoke is oozing out from the entire back. Do not dwell on specific events or things to get rid of. Simply brush them off. Gently accelerate the process with faith and confidence. Apply your willpower as needed. Continue with the process for about 20 minutes. As the impressions leave, you will feel lighter and lighter, creating a vacuum in the heart. A sacred current from the divine source descends to your heart to fill the space. The sacred current is helping you remove the impressions. When complexities and impurities are gone, you're feeling simple, you're feeling pure. The sacred current is entering every cell, every corner of your body. The whole body is feeling sacred. Your whole body is now completely purified. So I hope you all are able to follow this video. As I was saying that when we are stepping into the realm or region of our higher consciousness, we need to learn the language that's there, and that language is of absolute purity, simplicity, and stillness. Because these are all very noble qualities, very gentle and very subtle, uh, qualities. I would say it's not even qualities, they are the characteristics of our being, right? So when we are stepping into our heart, if we carry a lot of burden, we may not be able to experience that. So this heartfulness cleaning helps us to get rid of all the complexities and impurities and actually experience, that light which we all have within us, that, source of higher consciousness. So I hope you all are ready to experience this technique. Um, as as of now, I cannot see the chat window, but I hope that you all are ready. So what we will do is हम बहुत आराम से बैठ जाएंगे. आप चेयर पे बैठ रहे हैं, सोफे पे बैठ रहे हैं, तो just sit in a relaxed position and gently close your eyes, and we are going to do guided cleaning, and afterwards we are going to meditate. That is two techniques. First one is cleaning, wherein I'll be sharing some suggestions with you. You just follow them very gently, and then we will meditate. So for cleaning, what do we have to do? We have to invoke our willpower. अबे विल पावर का मतलब बहुत शक्ति लगाना, बहुत जोर लगाना होता है क्या? It's not like that. Willpower is just invoking that, I want to get rid of all these complexities and impurities. And how do we do that? हम क्या करते हैं, हमारे सिर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, वहां से लेके जो हमारा टेल बोन है, as you are able to see in the picture, we feel that part of our body, and we are able to feel that, and we give a suggestion, a mental suggestion to ourselves, that if there are any complexities or impurities
difficulties, or if there is any kind of heaviness in my existence, it is going out from the back in the form of vapor or smoke. So that we will do. At this time we have to very naturally apply our willpower. बहुत स्वाभाविक रीति से हमें अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना है, जोर नहीं लगाना है. तो हम 5-10 मिनट ये सफाई करेंगे. देन जेंटली वी विल मेडिटेट. सफाई हमें कब करनी है? द रिकमेंडेड टाइम इज इन द इवनिंग, because in the evening it's like getting rid of all those impressions which we have accumulated during the day, and rejuvenating that condition of meditation, the condition of peacefulness, condition of joy, condition of harmony. तो हम अभी सफाई करेंगे और उसके बाद में हम ध्यान करेंगे, एंड आई विल बी गाइडिंग यू. सो आई रिक्वेस्ट यू दैट यू प्लीज टेक एक्सपीरियंस ऑफ दिस टेक्निक. तो आप आराम से बैठ जाइए, आंखें हल्के से बंद करें और अपने सिर के सबसे ऊपरी हिस्से से लेकर जो आपका टेल बोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है, उसे आप महसूस करें. आप उसे बहुत सरलता से महसूस कर पा रहे हैं. अब अपने आप को ये सुझाव दें कि इस भाग में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धता या जटिलता अगर है तो वो पीठ से धुएं के या भाप के रूप में बाहर निकल रही है. If there is any complexity or impurity in this region, then it's going out from the back in the form of vapor or smoke. Your willpower is very naturally and gently supporting you in this activity. The help of your willpower is available. Remain alert and attentive. All the complexities and impurities in the entire existence, heaviness is going out from the back in the form of vapor or smoke. You are able to do it effortlessly and very naturally. If there is heaviness in your heart or in the entire existence, it's going out from the back in the form of vapor or smoke. आप बहुत आसानी से और सरलता से इसे कर पा रही हैं. अगर किसी प्रकार का कोई बोझ है तो वो सारा पीठ से भाप के रूप में या धुएं के रूप में निकल रहा है. अगर किसी प्रकार के पीड़ादायक विचार है, आदतें हैं, वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, तो वो पीठ से भाप के रूप में
या धुएं के रूप में हमेशा के लिए निकल रही है। किसी भी प्रकार का कोई आवरण है, छापे हैं, इम्प्रेशंस है, तो वो सारा पेट से भाप के या धुएं के रूप में निकल रहा है। Now very gently accelerate this process. इस प्रक्रिया की गति अभी तेज करिए, बहुत आसानी से। अब इस प्रक्रिया की गति जो है वो बढ़ गई है। The process is accelerated and all the impressions are going out from the back in the form of vapor or smoke very fast. Now give a assertive suggestion that all the impurities, complexities and heaviness and grossness is gone out from the entire existence. आपके अस्तित्व से सारी नकारात्मकताएं और जड़ता चली गई है। आपका अस्तित्व संपूर्ण शुद्ध और सरल हो रहा है। सामने से दिव्य धारा आपके हृदय में प्रवेश कर रही है और आपके संपूर्ण अस्तित्व को सरल और पवित्र बना रही है। The divine light is entering in your heart from the front and your entire existence is becoming purer and simpler. Now very gently withdraw the willpower. अपनी इच्छा शक्ति को बहुत हल्के से विड्रॉ करिए। Turn your attention towards your heart. हल्के से अपने ध्यान को अपने हृदय की ओर ले आए और जो दिव्य प्रकाश आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है, अपने आप को उसमें डुबो दीजिए। Immerse yourself in the source of that peacefulness, joy and divine light in your heart. उसमें डूब जाएं, उस पर ध्यान करना आरंभ करें।
Now, very gently bring your attention back to the present moment. बहुत हल्के से अपना ध्यान इस क्षण में वर्तमान में ले आए और कुछ क्षणों के लिए अपनी स्थिति का अवलोकन करें। आपको कैसा लग रहा है ये आप डायरी में भी नोट कर सकते हैं। जब हम डायरी में लिखते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन, तो हमारे थॉट्स में काफ़ी क्लैरिटी आती है और हमें हमारी अंदरूनी स्थिति को समझने में सहायता मिलती है। So it was all about today's session. अगर आपके कोई सवाल है या आपको कैसे लगा, इफ यू वांट टू शेयर, आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिख सकते हैं। और हम अपनी ओर से अगर कोई सवाल है तो उसका समाधान करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and I really hope and pray that may you all be benefited by these wonderful and amazing techniques of heartfulness. They are life-changing skills, life skills, and the more we develop, these skills, the more we develop our own self. Our personality changes, our thought process changes, the negativities go away, and we feel rejuvenated and joyful. And that inner guidance is always available to us. We do not feel lonely because that mitra, that sakha is always guiding us from within. So it's that source of that inspiration, creativity, innovation, joy, peacefulness, you name it, and that nobler quality is there. So I thank you so much for your cooperation.